but I think we should start. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali Madadna, Assalamu alaikum. This is the 11th session actually we are doing as part of our career facilitation program. जैसा कि आपको मालूम है कि आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर पाकिस्तान ने पिछले साल एक सीरीज ऑफ वेबिनार स्टार्ट किया था जिसमें हमारा जो मकसद है वो ईयर 10 से लेकर और ईयर 13, 14, 15 के जो हमारी जमात के स्टूडेंट्स हैं और इवन उनके पेरेंट्स जो हैं उनके लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमारा मकसद आप जितने भी हमारे प्रोफेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं उनके टॉप एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जाए और उनसे पता किया जाए कि हाउ टू परसू दैट पर्टिकुलर करियर। जो हमारे पुराने जो हमारे वेबिनार्स गुजरे हैं, इफ़ यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल, वी हैव डन वेबिनार्स ऑन careers in computer sciences, media sciences, we've done in computer sciences, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारे और भी हमने टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक है और आई थिंक हमारी खुद की कम्युनिटी में ही कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये करियर अपनाया है और आप लोग जो ऑफिसेज में और ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, आप लोगों का इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ज़रूर सामना करना पड़ता होगा। और जो टॉपिक है वो करियर्स इन ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी है। कुछ लोग हमेशा इन दोनों फील्ड्स को एक साथ लेके चलते हैं, कुछ लोग अलग अलग लेके चलते हैं, बट जनरली मैंने नोटिस यही किया अब जो ट्रेंड है कि इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग जो है वो एक साथ साथ चलती है। मेरा नाम इमरान भामानी है। आई हैव बीन डूइंग दिस वेबिनार फॉर द लास्ट 10-11 months और कुछ मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है टू आस्क द क्वेश्चंस। आप लोग के जो चैट्स पे सवालात आते हैं, व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू रीड देम एंड आई प्रेजेंट टू देम टू द गेस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आप लोग देखा होगा कि यू गाइज आर ऑल म्यूटेड, सो दरमियान में हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ अगर कोई ऐसे बर्निंग क्वेश्चंस हैं जो आप ऑडियो पे पूछना चाहें हम आपको ज़रूर ऑनलाइन लेंगे, अदरवाइज we'll keep our conversation going on and I'm pretty sure by the end of the conversation आप लोगों के सारे सवालात के जवाबात आंसर हो गए होंगे। and please do, you can interact over chat. So I'll just quickly now introduce our guest or an expert, Mr. Noman Nasrullah is with us today. उनको किसी तारुफ की ज़रूरत तो है नहीं, but still I'll tell you a little bit about him and then he can take it forward. Noman Nasrullah has been a growth catalyst and he's a crossroads of human capacity building and strategy and innovation facilitation. He is a certified design thinking facilitator, an organizational strategy and development consultant, and an ardent fan of continuous learning, and he brings with him 18 years of diverse professional experience across Pakistan and UAE. He has been a facilitator consultant with Funverks Global, and he also manages the Funverks Global Middle East region. Iske alawa ji, he's worked in several countries like Bangladesh, Bahrain, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka. I'm very glad that we are able to actually catch him today because he generally remains up in the air. So thank you very much, Noman, for joining us today. And over to you. What do you want to start with? How do you want to introduce yourself a bit more for the people जिनको ये मालूम नहीं है इस टॉपिक के बारे में कि किस तरह का टॉपिक है, and of course about your own self. Right, Imran. Thank you for your detailed introduction. इसे हम अमूमन कहते हैं कागजी तारुफ जो हमारे प्रोफाइल्स पे जो है वो मौजूद होता है, बिकॉज बीइंग अ कंसल्टेंट ट्रेनर आई थिंक जो कागज जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या जो ईमेल पे सबसे ज्यादा मांगता है वो हमारा प्रोफाइल होता है, which is in a nutshell of what our expertise are, right? So जो लोग पूछ रहे थे कि जी आज का टॉपिक है क्या, और आपने भी जो शुरू में बात की कि जी कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, these actually are two very diverse fields, but yet they converge, right?
तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे ये फील्ड्स मिलती हैं। अमूमन अमूमन एक अच्छा ट्रेनर जो है वो एक अच्छा कंसल्टेंट होना चाहिए, बट एक अच्छा कंसल्टेंट हमेशा एक ट्रेनर हो ये जरूरी नहीं है। नाउ व्हाट आई मीन फ्रॉम दैट, राइट? नाउ कंसल्टिंग, एज द वर्ड सजेस्ट, इज ऑल अबाउट कंसल्टिंग अ क्लाइंट। अमूमन एक कंसल्टेंट जो है वो या तो स्पेसिफिकली किसी इंडस्ट्री के साथ काम करता है या क्रॉस इंडस्ट्री जो है वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कंपनीज के पास इतने सारे लोग हैं तो फिर कंसल्टेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? एंड दैट स्टेम्स आउट फ्रॉम द नीश कि वो कंसल्टेंट जो है जिसमें ऑपरेट कर रहा है। um, लोग पूछते हैं कि कंसल्टेंसी के लिए जो है वो या ट्रेनर बनने के लिए जो है वो कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, और उनसे मेरा सवाल अमूमन ये होता है कि सवाल ये है कि किस फील्ड में कंसल्टिंग करनी है, राइट? सीनियर डॉक्टर्स को भी आपको पता होगा कंसल्टेंट कहा जाता है, राइट? और उनको कंसल्टेंट इसीलिए कहा जाता है, अमूमन डॉक्टर्स को कंसल्टेंट इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो पुराने जमाने में जो है वो नब्ज पकड़कर जो है वो बता दिया करते थे कि जी किस किस्म की बीमारियां हैं, और आजकल डॉक्टर्स जो है वो मुख्तलिफ डायग्नोस्टिक्स करके, ब्लड टेस्ट करके, एक्सरे करके, एमआरआई करके जो बताते हैं। इन अ नटशेल दैट्स व्हाट अ कंसल्टेंट डज। कंपनीज की जो चैलेंजेस हैं, बहुत सारी नीशेस ऐसी होती है जिसमें कंपनीज को कंसल्टेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इंटरनल एक्सपर्टीज नहीं होती है, या उनको क्रॉस इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो कंपाइल करनी होती है, और कंसल्टेंट क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक ही वक्त में काम करते हैं तो दे कुड ब्रिंग ऑल ऑफ दैट ऑन द टेबल। या कभी कभार जो है वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो एक थर्ड पार्टी व्यू चाहिए होता है, जब एंड दिस इज व्हेन दे ब्रिंग समबडी फ्रॉम आउटसाइड, राइट? सो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो आपका व्यू जो है वो डिफरेंट होगा, और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है तो आपका व्यू डिफरेंट होगा। You've stayed in Dubai. I live in Dubai. I spent a lot of time in Pakistan. अब इसको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ कि बुर्ज खलीफा दुनिया की मशहूर तरीन इमारत में से एक है, राइट? अब बुर्ज के बाहर का जो व्यू है वो आई थिंक द मोस्ट फोटोग्राफिक व्यू जो है वो शायद दुनिया का होगा। जो है वो दुबई का है, जो दुबई जाता है वो बुर्ज खलीफा जरूर जो है वो देखने जाता है। यहाँ जो है वो न्यू ईयर नाइट पे बुर्ज के जो फायरवर्क्स हो रहे होते हैं वो दुनिया में लोग यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, लेकिन बुर्ज के अंदर का जो व्यू है वो बहुत ही डिफरेंट है, राइट? और वो व्यू जो है वो बहुत सारे लोगों को अगर आप देखें तो वो इतना जो है वो शायद इतना एंटाइसिंग, इतना एक्साइटिंग ना लगे जो बुर्ज के बाहर से जो व्यू की, तो बुर्ज की एक अपनी जो है वो वैल्यू है। या इट इज एक्साइटिंग अगर आप बुर्ज की टॉप से बैठ के जो है वो पूरी दुबई का नजारा कर रहे हो, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन की कुछ इस तरह के चैलेंजेस होते हैं व्हेन दे नीड अ थर्ड पार्टी, व्हेन दे नीड अ बर्ड्स आई व्यू टू कम फ्रॉम आउटसाइड। अब सवाल यह है कि कंसल्टिंग फील्ड के लिए क्या करने की जरूरत है। सो देयर इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग। जितने करियर्स आपने शायद पास्ट 11 महीने में कवर किए हैं, उन तमाम करियर्स के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपसे कुछ करियर्स तो सुने थे, उन तमाम करियर्स के जो है वो कंसल्टेंट्स जो है वो आपको मिलेंगे। सो फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने मेंशन किया। Now there are lots and lots of artificial intelligence consultants that work with organizations के जी अगर AI को इंट्रोड्यूस करवाना है या एआई ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन को, तो फिर वो कंसल्टेंट आता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जो है वो मेरे ख्याल में सबसे कॉमन फील्ड है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इज ऑल अबाउट कि एक इदारे के अंदर लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है उसको किस तरह से जो है वो पार एक्सीलेंस पे लाया जाए, एंड उसमें क्या चैलेंजेस हैं, तो कंसल्टेंट जो है वो उन्हें बुलाया जाता है। कभी कभार वो और इदारे की पल्स या नब्ज जो है वो भापते हैं और बताते हैं कि ये चैलेंजेस हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, एंड देन दे वर्क ऑन अ स्मॉल प्रोजेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर कभी कभार वो ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ हैंड ओवर कर देते हैं, या फिर प्रोबेबली जो है वो कोई और कंसल्टेंट वहां से आके उसको जो है वो कंटिन्यू करता है, या कंसल्टेंट जो है वो लॉन्ग टर्म काम करता है। सो अगर ये सवाल किया जाए कि जी कंसल्टेंसी के लिए क्या पढ़ने की जरूरत है, मेरा अमूमन लोगों को जवाब ही होता है कि जी जिस फील्ड का भी आपको शौक है उसके अंदर कंसल्टेंसी जो है वो की जा सकती है। कंसल्टेंट क्यों बनना चाहिए या लोग क्यों बनना चाहते हैं, तो उसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। कुछ लोग हैं जो एक ही
जॉब पर बैठकर नॉन स्टॉप काम करना या एक ही कंपनी के साथ जो है वो एक ही रूटीन में काम करना नहीं चाहते। एंड दिस इज वेयर द पर्क्स ऑफ कंसल्टेंट्स लाइफ आती है। आज हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं कॉर्पोरेट, कल हम नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, या परसों जो है हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आज पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं, आज स्ट्रेटजी पे बात हो रही है, तो कल जो है वो लीडरशिप ट्रेनिंग हो रही है। तो इस वजह से जो है वो consultancy becomes very interesting. And if you have any questions, otherwise I can then go on what is training and development and how does that work? जी नोमान, I'll have many questions. Basically, एक तो आपने बताया कि जनरली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपने जिस तरह बताया कि यू आर इन अ फील्ड ऑफ कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग, बट आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की तरफ से। इसके अलावा अगर किसी को इंजीनियर्स रिक्वायर होंगे तो वो किसी इंजीनियर को एज ए कंसल्टेंट लेकर आएगा, एआई को तो एआई लेकर आएगा। अगर मार्केटिंग की बात करेंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी होगी जो कि कंसल्टेंट ऐड करेगी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछूं कि किस तरह की एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट की होती क्या है आफ्टर दे मे बी गेट अ कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट, और किस तरह की एक्टिविटीज उसको करनी पड़ती है? राइट, सो एक तो नहीं, आई थिंक एक से थोड़ी सी जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अमूमन कंसल्टेंट्स जो है वो उन्हें कंपनीज इस वजह से बुलाती हैं बिकॉज प्रोबेबली वो एक्सपर्टीज जो है वो कंपनी के अंदर इस वक्त मौजूद नहीं है, या कंपनीज जो है वो उनको शॉर्ट टर्म एक प्रोजेक्ट एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए फुल टाइम एम्प्लॉय जो है वो हायर करना शायद वो ना चाहें। दिस इज वेयर कंसल्टेंट कम्स इन। कंसल्टेंट का काम जी बड़ा सादा सा होता है। सबसे पहले कंसल्टेंट आता है, कंसल्टेंट जो है वो किसी न किसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए, किसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए जो है वो उन्हें बुलाया जा सकता है। आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, आपको पता है सन 2020 में दुनिया में जो है वो एक चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर आया था। एंड I'll actually leave it open for people to respond. चैट में बताइएगा किसी को उसका नाम पता है? There was a chief transformation officer for the world जिसने पूरी दुनिया में काफी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लेकर आया था। Anyone in the chat? Any wild guesses? Imran, any wild guesses? You're on mute, Imran. EY, Zora कह रही है EY. Zora, no. 2020 वर्ल्ड हैड अ चीफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन की है पूरी दुनिया में, इदारों में, ऑर्गेनाइजेशंस में। काम करने का तरीका जो है वो बिल्कुल बदल दिया था उस वक्त, और उसके बाद नया तरीका जो है वो काफी दुनिया में जब आए थे। मेक अ वाइल्ड गेस। I would say COVID. Right, so कोरोना जब आया तो it forced people to bring about change in organizations. किसी ने नहीं सुना था कि देखिए वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। बहुत सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जो है वो काम होना शुरू हो गया। बैंक्स हो, डिलीवरी कंपनीज हो, इवन गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत सारा जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया क्योंकि लोग इन पर्सन जो इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे। एज एन एग्जाम्पल, जब कोविड आया तो दुनिया का और इदारों का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि जी रिमोट वर्किंग किस तरह से की जाए। हाउ लोग जो है वो आदी थे कि जी साथ बैठना है, ऑफिस जाना है और साथ बैठकर जो है वो काम करना है। अब जब रिमोट वर्किंग शुरू हुई तो कोई घर पर है तो पहला चैलेंज आता था कि जी काम में और घर में जो है वो किस तरह से जो है वो एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। रात 11 बजे भी जो है वो मीटिंग चल रही होती थी और सुबह के दिन के 12 बजे जो है वो आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं या आप प्ले स्टेशन लगाकर खेल रहे हैं और ऑफिस का कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली रिमोट वर्क का एक चैलेंज ये भी था कि लोग जब एक दूसरे से दूर थे तो कम्युनिकेशन गैप्स जो है वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए। This is where, for example, a lot of management consultants were consulted. इदारे का एक चैलेंज था कि जी किस तरह से रिमोट वर्क को जो है वो हम मीनिंगफुल बना सकते हैं और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स आज भी हैं जो रिमोट वर्क पे ही सिर्फ एडवाइस भी देते हैं कि जी रिमोट ऑर्गेनाइजेशन या रिमोट टीम्स को किस तरह काम करना चाहिए, क्योंकि रिमोट टीम्स का काम करने का तरीका जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ है बनस्बत फेस टू फेस। राइट, आजकल
दुनिया में जो है वो एक चैलेंज जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी का। चीजें हैक हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो पाकिस्तान में एक कंपनी जो है वो हैक हो गई थी, और वो बहुत ही जो है वो कहते हैं ना, कुछ शगुफ्ता अल्फाज लोगों के को डायरेक्ट मैसेजेस जो है वो भेज रही थी, ना जेबा किस्म की गालियां जो है वो हैकर जो है वो भेज रहा था। एंड at that moment some of the a consultant for cyber security is required, right? So जब भी कंपनी के अंदर कोई एक ऐसा चैलेंज आता है जो एक नीश है, जिसकी एक्सपर्टीज शायद इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो डेवलप नहीं की है, दिस इज व्हेन अ कंसल्टेंट वुड बी कॉल्ड इन। कंसल्टेंट जो है वो पहले चैलेंज को डायग्नोज करता है, जस्ट लाइक अ डॉक्टर, कि जी चैलेंज है कहाँ, इट्स अ सिस्टम चैलेंज, इट्स अ पीपल चैलेंज, इट्स अ रिसोर्स चैलेंज, इज इट एनीथिंग एल्स। अगर सिस्टम चैलेंजेस है तो सिस्टम्स के अंदर जो है वो चेंजेस की बात होती है। अगर पीपल चैलेंजेस है तो फिर उसमें पूरी पीपल कंसल्टिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग जो है वो आ जाती है। वंस वो चैलेंज को डायग्नोज कर दिया जाता है, देन कंसल्टेंट का काम होता है कि वो एक पूरा प्रोजेक्ट मैप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो है वो डिजाइन करते हैं, और अपनी एक्सपर्टीज, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करते हैं। और उसके बाद अमूमन इदारे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो या तो खुद करते हैं, या अगेन इम्प्लीमेंटेशन जो थर्ड फेज है उसके अंदर जो है वो कंसल्टेंट का भी जो है वो रोल होता है, कि वो या तो टोटली कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो इदारे के साथ मिलकर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसको कर रहे होते हैं। So any challenge that a company is facing that they are not able to solve themselves, उस वक्त जो है वो कंसल्टेंट की नीड आती है। और बिकॉज कंसल्टेंट उस नीच का एक्सपर्ट होता है, तो बहुत ही शॉर्ट पॉसिबल टाइम में वो कंसल्टेंट कंपनी या इंडिविजुअल कंसल्टेंट, क्योंकि इंडिविजुअल कंसल्टेंट के साथ भी एक पूरी टीम होती है, वो कंपनी को वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, जो कंपनी अगर खुद से डेवलप करना चाहे तो शायद टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई companies would hire a consultant. Now, और आई there are थिंक millions and millions and zillions of challenges जिसको अगर हम अभी अगर बताना शुरू करें तो शायद पूरी रात निकल जाएगी, और probably जो है वो हम उन challenges पे बात कर फिर भी compete नहीं हो सकेगी। and how would you link that with training, the training part? Because मुझे जिस हम खैर पाकिस्तान में ही ज़्यादातर हमने काम किया है, now half of my life has been in the GCC. There's a stark difference that I've seen in Pakistan. Probably the concept of hiring a consultant को impact शायद employees के ऊपर negatively आता है कि भाई अगर हमारे पास आप लोग हैं, why do you need a consultant? And in the GCC, it's the opposite. People feel proud if they outsource something to the consultant and then take their own credit. इस बात में कितनी सदाकत है? और then maybe you'll be link it with the training, क्योंकि training is the oldest, right? पिछले जमाने में 1 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग करते थे क्लासरूम में बैठ के, इवन ऑन द जॉब होते थे, क्लासरूम में बैठ के ट्रेनिंग करते थे। तो a trainer would come, tell you about soft skills, tell you about some एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट जब एक्सेल आया था तो उसकी ट्रेनिंग बहुत हुआ करती थी, मैं विंडोज की हुआ करती थी। तो किस तरह से आप हाउ वुड यू अप्रोच दीज क्वेश्चंस? Right. So first, I think you spot on. Pakistan में जो है वो consulting is in a very different zone. For majority of the organizations, अभी भी पाकिस्तान में जो है वो दुनिया की टॉप कंसल्टिंग फर्म्स भी काम करती हैं, या तो उनके दुबई हेडक्वार्टर्स होंगे, वो यहाँ पे काम कर रहे होंगे, या दे इवन बिग फोर्स जैसे हैं, दे ऑलरेडी हैव अ वेरी एस्टैब्लिश्ड कंसल्टिंग एडवाइजरी बिजनेस। लेकिन पाकिस्तान में अमूमन जो है वो ट्रेनर को ही जो है वो कंसल्टेंट माना जाता है, और जो है वो अनफॉर्चुनेटली अनटिल एंड अनलेस जो है वो बहुत ही टेक्निकल कंसल्टेंट रिक्वायर्ड हो। फॉर एग्जांपल टेलको में 5G जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो बहुत सारे कंसल्टेंट जो है वो बाहर से जो है बुला लिए जाते हैं। पीपल चैलेंजेस की जब बात आती है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की अगर हम बात करें, बहुत बहुत होता है कि फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो अगर एक ट्रेनर है तो उसे, एंड आई टॉक अबाउट व्हाट ट्रेनिंग इज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंसल्टिंग, एंड व्हाट आर द कन्वर्जेंस दैट टेक्स प्लेस। तो ट्रेनर को जी बुला लेते हैं कि जी हम आपको 2 दिन दे रहे हैं, और हमारे इदारे में जो पिछले 20 साल से जो है वो कम्युनिकेशन का चैलेंज चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप 2 दिन के अंदर जो है वो लोगों को ऐसा टीका लगाएं कि वो चैलेंज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और यहाँ से जाने के बाद जो है वो हमारे लोग बिल्कुल परफेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हो। Now you very well know that that's not possible, right? And अब उसको अगर ब्रेक किया जाए और उनको अगर पूछा जाए कि जी कम्युनिकेशन का चैलेंज है क्यों,
तो बात जो है वो बहुत सारी डायरेक्शन में निकल जाती है। कहीं पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज आते हैं, कहीं पे कम्युनिकेशन एज अ स्किल जो है वो नहीं सीखी हुई है। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान में हिस्ट्री रही है दैट कंसल्टेंट्स एंड दे बीन हायर्ड, नाम तो ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट होता था, लेकिन दर हकीकत वो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पर जो है वो ये होता था कि कुछ यहाँ तो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही होती थी, या कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी होती थी, तो कंसल्टेंट आता था, कहता था कि जी ये 20% फोर्स को जो है वो फारिग कर दें, और ये नई टेक्नोलॉजी आएगी, ये 15% लोग जो है वो फारिग हो जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। So Pakistan में there has been a fear when we use the word transformation, you know. But if you look at Middle East, if you look at places outside, अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कंपनी जो है वो पहले तो क्लियरली कम्युनिकेट करती है कि why are we moving towards transformation. It would take us to a level, a higher level. It would also take you at the higher level, because if you are working at the same level with the same technology or with the same mindset, or with the same concept, you're not growing, right? बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन उसी वक्त होती है जब एक लेवल पे आप हैं और आप उससे ऊपर के लेवल पे आप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम घोड़ों से जो है वो कार्स पर आए थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड। आप अगर आज वो अर्ली 1900 के अखबार उठाकर देखें तो आपको जो है वो फियर जो है वो नजर आएगा कि लोग जो है वो गाड़ियों को अडॉप्ट नहीं करते थे। देयर वाज अ लॉट ऑफ फियर, यू नो, लोग फिर भी जो है वो घोड़े जो है वो पसंद करते थे। आज अगर आपसे कोई कहे कि जी आप जो है वो क्लिफ्टन से करीमाबाद जरा घोड़ों पर जाएं और कार जो है वो बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई यू नो बीप बीप किस किस्म की जो है वो चीजें खाते हैं आप, जो आप इस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हैं। So transformation, unfortunately, in Pakistan is taken in a very negative sense, and that has created a fear for the word transformation, and also for the consultants coming in. So, and secondly, niche consulting is something which is growing and developing in Pakistan, right? बहुत मर्तबा ये होता है कि एक कंसल्टेंट जो है वो मल्टीपल एरियाज में एक साथ जो है वो कंसल्टिंग दे रहा होता है, लेकिन दुनिया में जो है वो नीश कंसल्टिंग हैज बीन ग्रोइंग अ लॉट। टेक कंसल्टेंट है, सो विद इन टेक आल्सो देयर आर वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। नाउ अ कंसल्टेंट एंड ऑफ द डे हैज टू बी अ स्पेशलिस्ट। अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं है, आपको अगर खुदा न खास्ता कैंसर है और आप अपने जीपी के पास जाएंगे तो वो आपका इलाज नहीं कर सकता, वो आपको एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। सो कंसल्टेंट हैज टू बी अ स्पेशलिस्ट, and that quality of specialists when they are there, then uske baad jo hai wo they can provide the right advice. So for example, if you are a cyber security expert, then you would help the organization to work on cyber security. You can be a tech expert, but you can not necessarily a cyber security expert. Agar hum people skills ki baat kare to people consulting mein people HR process mapping एक field in itself है। people development या capacity development जिससे मेरा लिंक है वो एक फील्ड इन इटसेल्फ है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज अ फील्ड इन इटसेल्फ। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बुटीक फर्म्स नजर आएगी जो नीश में स्पेशलाइज करती है। हमारे यहाँ बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट का रोल भी करते हैं और वो तमाम नीश पे जो है वो काम करते हैं। इसी वजह से जो है वो आई थिंक देयर हैव बीन अ चैलेंज, बट honestly I think that is changing and that is changing fast. I've seen some great niche consultants जो पाकिस्तान में भी जो है वो आ रहे हैं, या फिर मिडिल ईस्ट से जो है वो आते हैं। लॉट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज who would come over here and work and then go back. So that is primarily what consulting is, right? Training and development. Training मेरे ख्याल में शायद दुनिया का जो है वो अगर सबसे पुराना नहीं तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो है वो प्रोफेशन होगा। पिरामिड जब बन रहे थे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उन लेबर्स को ट्रेन किया गया था कि इतने बड़े बड़े लाइमस्टोन आपको जो है वो बहुत ही दूर से लाकर इस पिरामिड पे एग्जैक्टली किस पोजीशन पे जो है वो प्लेस करने हैं ताकि ये पिरामिड जो है वो कंप्लीट हो सके। अनफॉर्चुनेटली ट्रेनिंग एक्चुअली स्टार्टेड विद एनिमल्स, राइट? तो जब लोगों ने जो है वो एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ और लोग एक जगह जब रहने लगे तो उनको जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की जरूरत थी। तो सबसे पहले जो है वो पेड़, बकरियां, कैटल, उनको डोमेस्टिकेट करने के लिए ट्रेन किया गया। आप ने मूवीज में देखा होगा कि जंगली घोड़ा अगर है और उसको अगर आप उससे सवारी करने की कोशिश करें तो हमारी इंडियन पाकिस्तानी मूवीज में तो होता है कि जी हीरो दौड़ता हुआ आता है और उसके ऊपर बैठता है और
हल्का सा उसको हाथ लगाता है, प्यार करता है और घोड़ा जो है वो बिल्कुल दौड़ना शुरू कर देता है. But in real life, that's not the case. You have to train the horse in order for that horse to be domesticated, right? So training goes a long way back. Um, in the recent times, organizations where that training has been converted into a field where again there is niche, right? So for example, अगर हम tech की बात करें, जब computers नए नए आए थे तो आपको याद होगा कि हमारे छोटे छोटे institutions थे जो आपको computer चलाना सिखाते थे. That was nothing but training, right? Training है क्या? Training is upskilling. You have a skill, उस skill को या तो बेहतर बनाना, you don't have a skill, so you're trained to get skilled, right? Now, when we talk about people skills, या मेरा जो area है, which is about capacity development or human capacity development, it is about software skills. So technical skills है, जिसके अंदर, for example, आपकी tech skills आ जाती हैं, आपकी artificial intelligence आ गई, आपकी engineering skills आ जाती हैं, आपकी supply chain skills आ जाती है, you name it, and those are technical skills जिसको कहा जाता है. And then soft skills is आपको मशीन चलाना बहुत अच्छी आती है, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन कंप्यूटर है, लेकिन अगर उसके सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस है तो फिर आपको पता है कि आपके साथ जो है वो क्या होगा, राइट? सो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस का सॉफ्टवेयर इज द पीपल. व्हेन पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर, दिस इज वेयर यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल स्किल्स, और उन पीपल स्किल्स को जो है वो सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है. और फॉर एग्जांपल एक बेहतरीन परफॉर्मर है, उसको जब प्रमोट कर दिया जाता है और वो मैनेजर बनता है तो अमूमन वो फेल हो जाता है बिकॉज उसको मैनेजरियल स्किल्स जो है वो नहीं सिखाई जाती है. और या अगर उसको प्रॉपर्ली ट्रेन किया गया है तो ही बिकम्स अ बेटर मैनेजर, राइट? सो ट्रेनिंग कम्स इन दैट वे. नाउ वेयर डज ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग मीट विद ईच अदर? अ गुड ट्रेनर जब तक वो पेन पॉइंट्स को नहीं समझेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके उसको डायग्नोस करके रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाएगा, रिलेटेड मेथोडोलॉजीज नहीं डेवलप करेगा, तब तक he would not be able to do a good job. अमूमन जो है वो हमारे कंपनी को खास तौर पे लोग कहते हैं कि हमें लीडरशिप पे कोई प्रोग्राम भेज दें, और हमारा सवाल होता है कि आपकी पेन पॉइंट्स क्या, आप लीडरशिप पे क्या करवाना चाहते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग. ओके, नहीं जी, वो फलां कंसल्टेंट ने तो जो है वो हमें लीडरशिप पे प्रोग्राम भेजा, तो आपके पास भी कोई प्रोग्राम होगा, आप जो है वो भेज दें. So until and unless you understand the challenge, you're not able to help people scale up. Because अगर आप ये नहीं जानते कि आप इस वक्त किस लेवल पे हैं और डिजायर्ड लेवल पे पहुंचने के लिए आपको किन स्किल्स की जरूरत है, so you would not be able to do a good job. So this is why a good trainer always has to be a good consultant. Now जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, ट्रेनिंग के अंदर डिलीवरी के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो जरूरी नहीं है कि वो हर कंसल्टेंट को भी करना हो. कंसल्टेंट आएगा अपने मैकेनिज्म्स के थ्रू डायग्नोसिस करके एक प्रोजेक्ट जो है वो एक सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट करेगा, उस सोल्यूशन में स्टेप्स दिए गए होंगे, सोल्यूशन में मेथोडोलॉजीज होंगी और वो चला जाएगा. लेकिन ट्रेनिंग की जब बात होती है तो ट्रेनिंग में यू हैव टू डिलीवर, you need to have public speaking skills, you need to have stage skills, right? So इसी तरह से ट्रेनिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कंसल्टिंग से जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है. लेकिन जहां तक नॉलेज बिल्डिंग की बात आती है, आप जिस नीश में भी काम करें, you need to be an expert or specialist. So this is actually, thank you for, leading. It's a leading question. किस तरह की qualities या किस तरह की skills required हैं to be a trainer, and is there any specific academic qualifications as well इस field में? All right. So again, the first skill that you need is being a specialist, right? So if you are a jack of all trades, right, you need to identify कि जी मैं किस niche में जो है वो consulting या training में जाना चाह रहा हूँ. हमारी community में जो है वो पाकिस्तान के one of the best trainers हैं जो MS Excel पे जो है वो training करवाता है. And organizations call him because आपको पता है कि आजकल MS Excel में पूरा business intelligence और data को crunch करके data को की एनालिसिस को जो है वो उस पे काम करके उसको किस तरह से जो है वो प्रेजेंट किया जाए इज कम्स टू एमएस एक्सेल. इसी तरह से अगर हम पीपल स्किल्स की बात की जाए तो पीपल स्किल्स में यस देयर इज अक्रॉस द बोर्ड. आई वुड वर्क विद एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन टीम डेवलपमेंट एज वेल एज लीडरशिप डेवलपमेंट. समटाइम्स आई वर्क ऑन चेंज मैनेजमेंट. लेकिन विद इन ट्रेनिंग आल्सो
there are niches that we master or we specialize in. तो अगर स्किल की बात की जाए तो सबसे पहले तो you need to be a specialist, right? अमूमन होता ये जी कि लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं and they think that they could be the best consultant or trainer on earth because they could speak well, right? You could speak well, but if you're not a specialist of that topic, you cannot deliver impact. So पहली चीज तो ये है कि you need to find out और identify कि आप किस niche में consulting या training में जाना चाह रहे हैं. If you want to be a tech trainer, what areas of tech training do you want to go in? If you want to be a digital skills trainer, आप जो है वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं. आपको पता है आजकल डिजिटल मैनेजमेंट पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को ट्रेन करती है कि जी आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, आपको गूगल को जो है वो अपने एडवांटेज के लिए किस तरह से यूज करना है. Similarly, if you want to be a people skills and capacity development, then you need to master management skills or you need to master managerial skills as well as you need to have the right knowledge. So specialist बनने के लिए you need to first have the right knowledge, the right experience, right? Then comes the whole idea of analytical skills, right? How detail oriented you are. किस तरह से जो है वो आप इश्यूज को समझकर एक सर्जन की तरह से, जब इट इज अमूमन जब ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है कि जी आप हमारा ट्रेन समझे बगैर जो किसी टॉपिक पर आके ट्रेन करवा दें, तो अमूमन मेरा जवाब ये होता है कि जी आई वुड बी लाइक अ सर्जन जो सर्जरी के टेबल पे तो खराब है और उसको ये नहीं पता कि जी मुझे सर्जरी कौन सी करनी है. अब आप सोचें अगर मैं पेशेंट को कहता हूँ कि जी मेरे हाथ में जी स्कैल्प है और अब मैं आपको जो है वो काटने लगाऊं और मैं पूरी बॉडी आपकी जब खोल लूंगा फिर देखूंगा कि अंदर जो है वो लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है, और उसके बाद जो है वो आई ऑपरेट ऑन यू. सो इफ यू आर दैट पेशेंट, आई एम श्योर इमरान एंड एवरीबॉडी एल्स वो कहेगा कि मैं किस तरह से यहाँ से अपनी जान बचा कर भागूं, राइट? So as a consultant, that niche, you need to have the right knowledge for that, and you need to have the right analytical skills to dissect an issue. Thirdly, जो चीज आती है वो आती है कि how creative you are. An organization would only hire you if you have the skill sets which is creative and unique enough, जो या दूसरों के पास नहीं है या उनके अपने पास भी जो है वो नहीं है. Again, you need to be very unique, and unique brings you back to the niche. You have to master your niche. You need to know what's going on right now. Best practices क्या है? What new are you bringing on the table? हम strategy formation की बात करते हैं और अगर मैं 1920 का एक डॉक्यूमेंट उठाकर कहूँ कि जी इस डॉक्यूमेंट के जरिए जो है मैं आपकी strategy formulate करवाऊंगा, तो that is not required. So again, what is that uniqueness or what is that specialty that you're bringing on the table? And then जो है वो फिर आपकी delivery skills आती है. You are a consultant or you are a trainer. If you're not able to deliver it well, you would not be able to create an impact, right? आप client के सामने खड़े होकर presentation दे रहे हैं, चाहे आपका एक बहुत ही serious जो है वो challenge है, जो बहुत ही technical है, but if you're not able to deliver it well, you can't create impact. Similarly, with a trainer, delivery skills becomes even more important. क्योंकि अमूमन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो पूरे पूरे दिन के होते हैं और कभी कभार तो 2-3 दिन तक भी होते हैं, और जो है वो हमारी फील्ड में जी मशहूर है जी ग्रेवयार्ड ट्रेनर्स, जो लोगों को जो है वो कबर के बहुत करीब ले जाते हैं, which means people are usually snoozing. So your delivery skills are very, very important. And now when I talk about delivery, that's a complete different field altogether, right? What methodologies are you playing with? So for example, I specialize in something called negotiate play, right? दुनिया में जो है वो कुछ चंद हजार ट्रेनर्स हैं जो लेगो, जिसे ट्रेडिशनली खिलौना माना जाता है, उसको यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस को इनोवेशन फैसिलिटेट करते हैं, स्ट्रेटजी जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात करते हैं. एंड आई हैव एक्चुअली वर्कड विद द टॉप लीडरशिप ऑफ मल्टीनेशनल्स प्लेइंग विद लेगो एंड क्रिएटिंग देयर 5-year strategy. So again, that's certain uniqueness जो आपको अपनी डिलीवरी में भी जो है वो लानी होती है. वरना खड़ा होकर बात करना तो जो है वो हर कोई कर सकता है. Absolutely. In fact, अगर आप ये देखें कि in the world now, खैर पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में तो भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, but they've become like celebrities, जिसको कहते हैं ना showmen. Like you talk about Anthony Robbins and Robin Sharmas of the world, उनको लोग हजारों लोग सिर्फ Zoom पर और physically इनकी trainings attend करते हैं because they're like celebrities. They make you dance, they make you cry, they make you laugh.
I think individuals उनको बहुत follow करते हैं, fan following, they have become influencers, they have become people like celebrities, right? तो ये भी एक उसका एक charm कह लें, या you know that level if you reach, I think then वो फिर consultancy और training के ही मयार से बाहर निकल जाता है. And on that note, एक बड़ा common सवाल आता है कि if I can just add over here, Kuram, you know, एक trainer की जिंदगी में stage performance plays a very, very important role. So, you know, if I have to give a percentage, you know, I would probably say 50-50, right? So your knowledge is important, your uniqueness is important, your creativity is important, but आपकी जो stage presence है, जो आपकी stage performance है, how if that is not there, so you know, for example, I've actually gone through a course, detailed course in theatrics. आवाज के साथ किस तरह से खेलना है, how do you engage people? I've done a you know, spontaneous comedy जो improv जिसे कहते हैं, उसका भी जो है वो course किया हुआ है. So yeah, that's definitely required, because आज जो है, and this is not just true for Pakistan, by the way, this is true for the world, right? As you said, Anthony said, Robbins की अपने बात की, Robbins के साथ जो है वो लोग 5 दिन एक ही कुर्सी पे बैठकर उसका प्रोग्राम अटेंड करते हैं. But it is euphoric, right? After energy. So yeah, that showmanship is definitely. Then I would say they are probably not good trainers. Am I audible, Imran? I think you're, yeah. I think you're. Am I audible now? Was a so मैं little कह रहा था late. कि showmanship is definitely part of training, लेकिन especially जो हमारे young जो हमारा youth है, उसको मुझे ये बताना है कि हमें, और जो पाकिस्तान में मैंने बहुत ज्यादा देखा है, लोग जब वो showmanship देखते हैं तो उन्हें ग्लैमर नजर आता है. They like, oh, जिंदगी वो तो ट्रेनिंग में जाके जो करनी है. But showmanship is nothing if you do not have the product or the content, or you are a specialist in your niche, and you know कि दुनिया में जो है वो latest क्या trends हैं, क्या चीजें हो रही हैं, and you're constantly reading, you're constantly updating yourself. So a good showman would probably survive, but not thrive for long as a trainer. So now, Noman, I think that's amazing. But tell us a little more about the industries, as in. Of course, you know, a consultant and trainer also needs to make money, or you know, he's not. If he's working with an organization, fine. Otherwise, you know, you're not depending on a salary. What industries have the highest demand for training and development? And related question is that क्या demand जो हमारी industry में है, उसके prospects क्या हैं growth के for a consultant and trainer, like अगर एक सैलरी इंडिविजुअल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ही गेट्स प्रमोटेड, ही गेट्स यू नो प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, एंड देन आगे बढ़ता रहता है. तो किस दो सवाल हैं, एक इंडस्ट्री कौन सी है जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है, और फिर दूसरा सवाल कनेक्टेड ये है कि व्हाट इज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट. Right. So industry की ज्यादा बात की जाए, again, Imran, it depends. If you're talking about management consulting या management training, people development, so it's across the board, right? I work with big multinationals. यहाँ पर Middle East में भी, Southeast Asia में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, and I work with local clients. The demand is there. However, competition भी है. एक consultant या trainer की जो बहुत सारी skills मैंने बात की, उसमें एक skill जो बहुत important होती है, वो होती है that how are you developing business, right? So even if you are working with known consulting firms like McKinsey or the big fours like PwCs and Ernst Youngs, etc., you would only grow if you are getting repeat business, if the client is asking for you, right? और आप अगर हमारी तरह से niche छोटी boutique firms है, तो हमारा काफी हद तक वक्त जो है वो कंसल्टिंग ट्रेनिंग में जा रहा होता है, और बाकी वक्त जो है वो बिजनेस ढूंढने में भी जा रहा होता है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, एंड दे फील कि जी अगर मैं ट्रेनर बन गया और मैंने सोशल मीडिया पे 2-4 जो है वो धमाके कर दिए, 3-4 यूट्यूब के चैनल शुरू कर दिए, मेरे जो है वो 3-4 हजार फॉलोवर्स हो गए, तो मुझे जो है वो बिजनेस आना शुरू हो जाएगा. इट्स नॉट दैट इजी. You need to have a brand name. So a consultant is just like a product that gets sold. And अगर product की brand image या brand
की पावर नहीं है, तो दैट इज अ चैलेंज, राइट। वो फिर अमूमन मैं लोगों को कहता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से जो है वो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ मारे गए थे। उन्हें लगता था कि जी मेरी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और पूरी दुनिया आ जाएगी जब मैं पाकिस्तान आऊंगा मुझे रिसीव करने, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एयरपोर्ट पर जो है वो 10-15 लोग ही जो है वो मौजूद थे, राइट। हम्म So as a consultant or a trainer, you need to constantly work in getting or generating business. Now that could be with direct selling, business development, selling your services and product to the client. That could be upskilling yourself enough. अगर आप एक बड़ी firm में काम कर रहे हैं तो of course at a junior level you don't go and probably sell yourself. You're probably selling a senior trainer. But even in the big firms, the partners or the directors are constantly working on developing business. Rather, Imran, आपने जो है वो big four के साथ जो है वो on the other side काम किया है. They've worked as consultants for you. You know very well that the partners of big firms come to sell themselves and sell their companies. So that is very, very critical. And at that point, you know, I feel that when people see training as a very glamorous field, I tell them to first build yourself and then jump into it. You know, I've been lucky that मैंने अपना career जो है वो training and consulting firm के साथ start किया था, but then 8 years I went on the other side of the court and I worked for a big business conglomerate, और 8 साल जो है वो internal transformation पे काम किया, जिसमें I was an internal employee working as an internal consultant but also working with external consultants. मैं जब उस ग्रुप के साथ था तो हमने McKinsey और KPMG के साथ different advisories पे काम की, and then I wanted to be back to the free me. तो मैं जो है वो फिर उसके हवाले से जो है वो I got back into my consulting field and started consulting and trading again. Excellent. So now एक और जाविया है इसके, हर फील्ड में अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा सराहियत कर गई है that fields are changing, technologies इस फील्ड को यानी कि कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी ने कितना इन्फ्लुएंस किया है, और क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी को टेक्नोलॉजी से फायदा हासिल हो सके? Sorry, Noman, you got dropped. Imran, am I audible? Yeah, you're back now. Yeah. Did you hear my question? I think I had a technical glitch. Naji, if you could repeat your question, please. We were talking about technology, how technology influenced many, careers in many areas. How has technology influenced the training and consultancy? And what are some important things then trainer and consultant needs to do to take advantage of this technology? Right. So, just like any other field, technology is taking over. ट्रेनिंग की अगर बात की जाए, पहले अगर मैं सिर्फ ट्रेनिंग की बात करूं तो ट्रेनिंग जो है वो इन पर्सन हुआ करती थी। लोग एक वेन्यू पे जमा होते थे, चाहे वो टेक ट्रेनिंग हो, चाहे वो पीपल डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल्स की जो है वो ट्रेनिंग हो, हार्ड स्किल्स हो या सॉफ्ट स्किल्स हो, राइट। अ लॉट ऑफ इट हैज गॉन डिजिटल नाउ, and digital requires a completely different skill. You need to understand how to operate in camera. You need to be very, very tech savvy. You need to understand कि जी मेरे सामने जब लोग नहीं है तो how would I create engagement? तो उसमें जो है वो for example things like Kahoots and polls and इस तरह की बहुत सारे tools जो है वो निकल कर आए। So then on the other hand, the whole idea of technology, artificial intelligence is going to play a big role. And ChatGPT. I think I was going to come to content creation. मतलब I think ट्रेनर से काम बड़ा आसान होने वाला है। मैंने ट्राई किया है थोड़ा बहुत कंटेंट निकालने की, लेकिन ChatGPT, probably I'm not using it directly, but yes, you're right. बहुत सारी चीजें जो है वो निकल कर आ जाती हैं बहुत easily. And again, Ellen, this is where it would come in, where how are you different from others? If you adapt to technology. So for example, there are within अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो technologies and methodologies, new methodologies are coming in. आज hybrid training की बात होती है. So how tech savvy am I, right? उसके बाद जो है वो PowerPoint जब नया आया था, उससे पहले लोग जो है वो
शायद आपको याद होगा इमरान के वो प्लास्टिक की जो है वो स्लाइड्स हम उसे कहते थे, और एक ओवरहेड प्रोजेक्टर होता था, और वो स्लाइड्स हम प्रिंट करवाते थे, और उसके ऊपर हम एक जो है वो पेपर रखते थे, आस्ते आस्ते करके उस पेपर को हटाते थे ताकि बुलेट पॉइंट जो है वो हम बता सके, राइट? एंड व्हेन PowerPoint came in, a lot of people didn't adapt it. People who adapted were able to create a completely different experience for training, right? Similarly, अगर हम consulting की बात करें तो consulting में भी जो है वो, if you are not upskilling yourself and you are not adapting to different technologies, then आप जो है वो पीछे रह जाएंगे. And let me conclude it with this way: a consultant's role is actually making himself or herself jobless every day, right? मतलब वो अपने आप को जॉबलेस इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर उसकी जो आज टेक्निकल या दूसरी जो एक्सपर्टीज है वो उससे बेहतर एक्सपर्टीज लेकर आता है, और कल जब वो अपने क्लाइंट के पास जाता है तो जब वो बेहतर एक्सपर्टीज ऑफर करता है तो जाहिर सी बात है, जब वो पुराना वाला नोमान है तो पुरानी एक्सपर्टीज दे रहा है, क्लाइंट को वो नहीं चाहिए, तो दैट नोमान इज जॉबलेस. So we are constantly, if we want to become a good consultant, we are actually making ourselves jobless every day, or we should be making ourselves jobless every day if you're not updating. And then again, it depends on which field you want to go in, right? I would say every field जितनी टेक्नोलॉजिकल अपडेटिंग अपडेट हो रही है टेक्नोलॉजीज, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं, so we are going nowhere. Okay, a very important question now regarding networking, because professional networking plays a very vital role, right? So what are some effective ways for the students to build their professional network within the industry of training? Right. So industry of consulting and training, I think the first way would be to connect with consultants and trainers, right? Big fours हैं, internationally जो है वो LinkedIn is an amazing tool right now to connect. And I think networking में जो चीज important है वो ये कि networking जो है वो अमूमन हमें ये लगता है कि जी हम एक स्विच खोलेंगे और नेटवर्किंग के जरिए हम किसी से कनेक्ट करेंगे, और वो अपनी तमाम चीजें छोड़कर जो है वो बैठकर और हमसे जो है वो नेटवर्क करेगा और हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेगा. सो you need to make effort, you need to put in time, you need to build relationships. अगर हम नेटवर्क की भी बात करें, find consultants, find trainers, connect with them, ask them how can we learn about consulting, how can we learn about training. However, youth के point of view से इमरान, मेरा हमेशा लोगों को ये कहना होता है कि until and unless you want to create a career with a big consulting firm, जिसमें there's this hierarchy, I usually tell people, in order to first become a specialist, and in order to become a specialist, it's always good to get experience in the field that you are working in, right? For example, if you want to become a cybersecurity expert, right? And if you've actually gained some experience working within an organization on cybersecurity, you cannot offer solutions until and unless you're part of the PwCs or the Deloittes, जिनकी एक career pipeline है जिसमें senior level पे जो है वो बहुत सारे cybersecurity experts बैठे हुए हैं, they take you through that process. हमारे यहाँ जो है वो training में खास तौर पे consulting तो I think it's again a very unique field जिसमें बहुत सारे लोग consulting as a career नहीं लेते हैं, but consulting as a career, especially with the big firms, can be amazing because consulting में जो learning curve है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आप एक ही ट्रैक में आस्ते आस्ते चीज सीख रहे हैं. बट विद इन कंसल्टिंग, इफ यू आर वर्किंग विद 4-5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिलीवरिंग 4-5 डिफरेंट सॉल्यूशंस, आपका लर्निंग कर्व जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है. लेकिन फिर आपको तैयार भी रहना पड़ता है कि यू हैव टू बर्न सम मिडनाइट ऑयल बिकॉज यू हैव टू वर्क वे मोर हार्डर देन व्हाट यू वुड वर्क इन अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ट्रेनिंग में खास तौर पे बहुत सारे लोग हैं, जब वो जो हमने थोड़ी देर पहले शोमैनशिप की बात की, जब वो शोमैन को देखते हैं जो स्टेज पे खड़ा हुआ है और वो लोगों को कंटेंट तो शेयर कर रहा है, उनके साथ एनर्जी बिल्ड कर रहा है, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज यूज कर रहा है, इंगेज कर रहा है, एक्सरसाइजेस के थ्रू गुजार रहा है, तो उन्हें लगता है कि दिस इज वेयर आई वांट टू बी, दिस इज माय कॉलिंग, दिस इज माय पैशन. एंड अब मैं यूनिवर्सिटी से निकला और कल जो है वो मैं ट्रेनर बनूंगा और मैं जो है वो ट्रेनिंग करवाऊंगा. ग्रेट, I would say super. Pardon me for saying this. I started my career with a training firm. If you get lucky and you join an amazing training firm and you get to grow, super.
But on the other hand, I usually tell people gain some specialist experience. That could be by working with a consulting firm, that could be by working within an organization, and then move in this direction. So, as a career, I'm not trying to, मैं लोगों को जो है वो उनका कॉन्फिडेंस शटर नहीं करना चाह रहा मैं बट मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ that it is not something which is straightforward and easy. Right, right. And final question, I think we're towards the end now. How would you gain some practical experience in this field? जैसा से आपने कहा कि पहले तो जिस फील्ड में आपने कंसल्ट करना चाहते हैं या ट्रेनिंग करना चाहते हैं उस फील्ड को सीखें, right? And it could be a specialized field. It could be, you could be working in the HR department, the finance department, or marketing, and then you can become a consultant or a trainer of that particular area. But how do you gain practical experience in actually the field of training? क्योंकि आप जब डेस्क के उस साइड पर आ तो जाते हैं, but then now you don't know कि जो चीज आपको नॉलेज आती थी वो आप डिलीवर कैसे करें. So how to get that practical experience in this field? Right. So I think number one to ye I need to ask myself, why do I want to become a consultant, or why do I want to become a trainer, right? And that why is very, very critical. Just because I see someone doing a great job and traveling around the world, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, but hopping from one airline to the other, running from one city to the other city, शुरू में तो ये बड़ा exciting होता है, but then it takes a toll on your health, it takes a toll on your emotions. It is not an easy task, right? So the question is, why do I want to be a consultant? One of the answers that usually I have for a why is that if I find myself as somebody who gets bored with regular mundane tasks very easily, right? I want something new happening for me to grow and be satisfied. Then consulting is an amazing field, or training is an amazing field, because you're constantly juggling with new challenges. Or if you want to be a specialist and you have a neck for seeking knowledge, finding new solutions and sharing those solutions, right? If you want to find and work on new solutions, then you have consulting is something which is for you. So again, you need to first find out why consulting, right? Or for example, agar mujhe tech consultant banna hai, why can't I be on the other side and just be a techie working for an organization? So you need to first figure out that why. Once you figure out that why, then you need to find out, what is the specialist niche that I want to work in? Do I want to be a telco consultant? Do I want to be an engineering consultant? Do I want to be a management consultant? Once you figure that out, then there are organizations that offer internship, that offer practical experience, which are consulting firms, training firms. Then you need to start networking with them. Find the right person, the right connect, and then get into that organization to get that practical experience through an internship. और उसके जरिए जो है वो आप consulting को, you can test waters and you can figure out, is this really for me? Is this something which I really want to do? I'll give you an example. Before coming into the people management field, I actually did my master's around 4 years back from Middlesex University, UK, master's in people management and development. मेरा जो academic career था वो actually start हुआ था back in 99, joining fast. And just because IT was the thing, और computer चलाना जो है वो बड़ा अच्छा लगता था, तो I just bumped into IT and then realized कि डब्बे के सामने बैठ के टक करना is not my thing, because I always wanted to be a people's person. And this is when I thought I'll become a tech consultant. And this is when I luckily created a technical simulation for a people management consulting firm, Navitas in those days. और वो जो solution था, वो firm जो है वो Unilever के लिए बना रही थी, और वहाँ मैंने देखा कि okay, this is exactly what I want to do. And then I started working, creating my knowledge, expertise and specialization in that niche. So the third step would be to find the right organization, and there are many organizations, by the way. और ये वो organizations नहीं है जो हमारी known companies की तरह से जो है वो internships announce करती है, right? Unilever जो है वो internship announce करेगी और बहुत सारी जो है वो एंग्रो अनाउंस कर देगा, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएगी. अगर आप वाकई बनना चाहते हैं तो seek and you shall get वाली बात है. Then find out if there are any organizations which is
which are providing consulting in cybersecurity? What are the organizations जो management consulting में जो है वो solutions provide कर रहे हैं? And they might not have regular internship programs, other than if they are global firms like McKinsey's and PwC's and Deloitte's and KPMG's, etc. You need to connect with them and ask them, is there a way that I can come and add value by providing my time and in return learn from you and do an internship? So you need to find that niche and then go and work with them. And trust me, interning with a consulting organization जो serious है आपकी growth के लिए, उससे आपको सिर्फ paper portion नहीं बना हुआ है, I believe you would learn probably much more than what you would learn in working for a conventional interning for a conventional organization. So these are the 3 steps. First, I would say figure out your why. Why would you want to be a consultant or a trainer? Second, figure out your niche. And third, find out those organizations and reach out to them and ask them, or chewing-gum ban jao, unko kahen ki ji mujhe jo hai wo I would want to come and learn, and I want an internship, and I want to come and work with you for 2 months, and then go and then work. And I think हमारा एक अगला webinar होगा how to make your internship successful, because that's an art and science in itself. But most of the people don't get anything out of an internship because they're just paper pushers. So that's a great topic. We can talk actually. about networking and that's a great topic. So that's broadly, I would say, what the 3 steps are. But consulting and training is not a pretty straightforward field, right? Any field that you pick up today would have consultants. Any field that you pick up today would have trainers. Sawal ye hai that what field do you want to master in? Why do you want to be a consultant? And then go for it. True. I think that's probably was to be my last question. And if I could just add one last thing, Imran, different career assessments हैं जिसमें MBTI is one of them. और वो जब मैंने अपना MBTI fill किया था तो उसमें यही आया था कि my attention spans with one thing, doing it again and again, were pretty low. So MBTI when you fill those, MBTI is a psychometric test. MBTI, Myers-Briggs testing instrument, something like this, right? Right. And it is an amazing instrument, especially for students, to figure out that what are they cut out for. So वो जब आप उसको जब आप fill करते हैं, again, now this is another consulting field, career consultants. आप जो है वो career consultant के पास जाएंगे तो आपको different assessments करेंगे, and they'll let you know that what field may work really well for you, from media to consulting. तो उसमें जो लोग ऐसे हैं who want to always do different things at different times and who have a creative skill of finding new solutions, उनका जो है वो automatically उसमें consultant निकल कर आता है. So again, I would strongly suggest for people to work with such assessments and figure out if it really suits your personality and your style. Excellent. तो वो मेरा ख्याल आपने उसमें रस्मी सवाल का जवाब भी दे ही दिया कि हम जो आखिरी में पूछते हैं कि कोई आपका फाइनल मैसेज क्या है to the students. मेरा final message, I think, especially not from a consulting point of view, but from a training point of view, ये है कि it looks like a very glamorous field. It is. There's a lot of showmanship in it. But there's a lot behind it, right? अगर एक कार जो है वो देखने में बड़ी जबरदस्त है, उसकी सीटें बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उसमें इंजन जो है वो अच्छा नहीं लगा हुआ, तो it won't be able to work. So don't just jump into training and consulting field just because you see it and you like it and you enjoy it and then you find it glamorous. Get into training if you really want to build solutions, and for that you'll have to work hard because you'll always have to be a step ahead of others. क्योंकि अगर वो solution organizations के पास मौजूद है, so they don't want a consultant or trainer to come and tell you that you need to be doing this to be different, right? So you have to be constantly on a lookout for those new solutions, and for that you have to really work hard. You have to read a lot. You have to find out what the new trends are, and yeah, just don't jump into a field just because you find it glamorous, right? अगर glamorous field में really जाना है, I think being an actor would probably be a better job than being a trainer, because you cannot be an actor only without content and be a trainer also. Excellent, Noman. I think that sums it up so well. Thank you very, very much. We had a lovely conversation, and it's all recorded. And so thank you for inviting. For people who couldn't attend today, they can always see it on YouTube later. And I think we will continue this conversation in other
other topics as well. So thank you very much, Noman, for joining, and thanks to our audience for attending. My pleasure, man. Thank you very much for inviting. All right, everybody, take care of yourself and keep attending our program. Share it with your friends. And thank you very much. Allah Hafiz and Ya Allah.